are they? What is sorry एटॉमिक मास? अब देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक मास, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्हाट इज। तो इस चैप्टर को शुरू तो पढ़ते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल मीन्स परमाणु एवं अणु। Ancient India and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. Around 500 BC, an Indian philosopher Maharishi Kannar postulated that if we go on dividing matter padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particles, beyond which further division will not be possible. He named this he named these particles Parmanu. Another another Indian philosophers Pagoda Katayama elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form, which gives us various forms of matter. Around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these invisible particles atoms, meaning indivisible. All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate this idea could be done till the 18th century. By the end of the 18th century, scientists recognized the difference between element and compound and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. Antoine L. Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination. प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चिकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी
जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि यह कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हम द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों के वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी विचारों को की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिक के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से ये पता करने के लिए इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइचिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। Law of chemical combination. The following two laws of chemical combination were established after much experiment by Lowell and Joseph P. Rost. रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइये एवं जोसेफ एल प्रॉस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। Law of conservation of mass. Is there a change in mass when a chemical reaction takes place? Take place. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हमने जिनका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है।
law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. In a compound such as water, the ratio of the mass of Loiser along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the compound came from or who prepared it. In a compound such as water, the ratio the mass of hydrogen to the mass of the oxygen is always 1:8. Whatever the source of water, thus if 9 gram of water is decomposed, 1 g of hydrogen and 8 g of oxygen are always obtained. Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 14 ratio 3 by mass, whatever the method of the source from which it is obtained. This is lead to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportion. This law was stated by Prost as in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by the mass. The next problem faced by scientists was to give explanatory explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then a philosophy Greeks, and said that the smallest particle of matter are atoms. His theory was based on the laws of chemical combination. Dalton's atomic theory provides an expression for law of conservation of mass and the law of definite proportion. According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, a mixture, is composed of small particles called atoms. This postulates of this theory may be stated as follows: all matter is made of very tiny particles called atoms, which participate in chemical reaction. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms of a given element are identical and in mass and chemical properties. Atoms of different element have different masses and chemical properties. Atom
combine in the ratio of a small whole number to form compounds. The relative number and kinds of atom are constant in a given compound.